Welcome back, dear students. So yesterday we stopped at asynchronous counters, and asynchronous decade counter. What we saw last. So we will just take a quick revision of that, and then we will proceed to only 2 points are left now: synchronous decade counter and down counter. Only these 2 points are left. Then we will see the numericals. So we will start by just revising asynchronous counter. Like I said, this is the diagram of an asynchronous counter. I have repeated this multiple times. This 3 flip-flops are used. That means 3-bit. It's a 3-bit counter. And if every flip-flop has got 2 outputs, right? 2 outputs. One is QA and the second one is over here. That is QA bar. Okay, for every flip-flop it is there. So here it will be QB bar. That is not mentioned here because it's not required here. So if you're taking output from the non-inverted output, from this output, upper output, then it is an up counter. Okay. And as the clock pulse is given only to the first flip-flop, this clock is not given directly to the other flip-flops. It is asynchronous. Output of this is given to the input of this particular flip-flop. So the output of the first flip-flop is given to the clock of the second flip-flop and so on. So as the clock is given to the first flip-flop A, what output will we see here? In QA, what you have to write what the nomenclatures may be a little different, but you have to write whatever you are taking as the output. If the output is written QA, you have to write QA. Okay. If the output is QB, you have to write QB. If the output is QC, you have to write QC. Please stick to the nomenclatures, okay, because that is the output. Fine. So all the outputs, all the flip-flops are going to change their state at the falling edge. Once they sense the falling edge, they will change their state from 0 to 1 or 1 to 0. This we had done day before yesterday. What we did yesterday was decade counter, right? What's decade counter? This is decade counter, but let us find out whether this is asynchronous or synchronous. The clock pulse is given on in the first flip flop. Okay, the output, see here, x0. Okay, I will consider this as QA. You can name it whatever is given in the textbook, no problem. You can write A, you can write QA, you can write x0, x1, anything. But the output has to be, the nomenclature has to be same throughout all the flip-flops. If you're using QA, then you will write QB, QC, QD, and so on. Okay. So this is the output of the first flip-flop. I will write QA. Output of the second flip-flop, I'm considering QB. So I will write QB, then QC, then QD. Okay, please stick to the nomenclatures. Let us see. Output of the first flip-flop is given to the clock of the second flip-flop. That means ये clock directly बाकी बच्चों को दिया नहीं है, सिर्फ पहले वाले बच्चों को clock दिया है directly. बाकी बच्चों को क्या first बच्चे से दिया गया. That means it's a decade. That means it's a asynchronous counter. Okay, this is an asynchronous counter. Now, if you can see, there is a NAND gate which has been given 2 inputs from B, output of B and output of D. I am considering this as D, I am considering this as B, I am considering this as C. Okay, so NAND gate mein what will be the formula? B dot D bar. That is the formula of NAND gate, right? Multiplication bar. वही है formula NAND gate का. So if you see, after every clock pulse, QA, when the clock pulse is given Q, the first flip-flop will start working, then followed by the second, third, and so on. At every falling edge. Okay, at every falling edge, once QA state started, QB will start. At every falling edge, it will change its state. At every falling edge of QB, C will start working, and at every falling edge of QC, QD will start working. But once it reaches the 10th clock cycle, this is the 10th clock cycle. Okay, if you can see in the 10th clock cycle, only QB is 1, A is 0, C is 0,
and QD is 1. ये नीचे का स्टेट मतलब 0 होता है ना, तो मतलब ये सिर्फ ये दो 1 है। तो देखो NAND गेट में क्या होगा, 1.1 बार इज गोइंग टू बी 0 एंड देन इट इज गोइंग टू रीसेट। आप देख रहे होंगे कि NAND गेट का आउटपुट ये R पे जा रहा है, R मतलब रीसेट, वो क्लियर होने वाला है। ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर गोइंग टू गेट रीसेट एंड इट्स गोइंग टू क्लियर इट्स डेटा। 0 क्यों? क्योंकि ये एक्टिव लो है, यहाँ पे एक बबल दिख रहा है आपको, ये बबल में जाके वो इन्वर्ट हो जाता है, इट बिकम्स लॉजिक 1। ठीक है, this was all about asynchronous. Now let us see what happens in synchronous decade counter. Okay, in synchronous decade counter, this is, I have taken it from the textbook, that is why it's looking like this, so please don't go by the sundarta, but just understand the concept. Okay, so this is a synchronous counter. Why is it synchronous counter? I will take a Why is it synchronous counter? You can see the clock. The clock is given to the first one also. The same thing is given to the second one also. The same thing is given to the third one also. The same thing is given to the fourth one also. Hence, this is known as a clock. Okay, this is known as synchronous counter. सबको एक ही दिया है. Now, what we will find out what is the output of this OR gate. Okay, there are AND gates over here in between two flip-flops, and there is an arrangement of AND OR circuit over here. Okay, now what happens is at the clock, at the rising edge of clock, I've told you it can be triggering at rising edge or falling edge, it doesn't matter. Now सिर्फ first flip-flop rising edge पे triggered है clock के, बाकी सब falling edge पे triggered है. तो ये rising edge पे QA will start working. It will change its state 0, 1, 0, 1 at every rising state, at every rising edge of the clock. Look at QB. QB is changing state at every falling edge of QA. ठीक है, QA जैसे ही state बदलता है QB भी state बदलेगा, जैसे ही state बदलता है QB भी 0 से 1 होगा, 1 से 0 होगा, whatever it is, and QC and so on QD. Now, what happens at the 10th clock pulse? What happens at the 10th clock pulse? After the 10th clock pulse, this AND and OR circuit immediately sends a reset signal to all these, or immediately can clear all the data, and this AND OR circuit connected to flip-flop D, this D, it detects, once it detects the occurrence of state 1001. 1001 कौन सा binary number होता है? 1001 is 9, है ना? It is 9. तो 0 to 9 ही चाहिए, है ना? उसके बाद नहीं चाहिए हमें. जैसे ही state होता है 1001 detect हो जाता है. After that, it recycles the counter. Counter recycle होता है. Okay. Now let us see the output of this OR gate. OR gate है मतलब कुछ तो प्लस है, ठीक है. AND गेट है मतलब दो मल्टीप्लिकेशंस है, ठीक है. नाउ AND, फर्स्ट AND गेट का इनपुट देखेंगे, ये जा रहा है इधर से इधर, है ना. सो दैट इज QA. आई विल राइट QA. सेकेंड इनपुट देखिए कहां पे है. सेकेंड इनपुट ये यहां से जा रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स इट इज QD. सो QA into QD प्लस सेकेंड वाले AND गेट का इनपुट फाइंड आउट करेंगे. इसका इनपुट आ रहा है ये AND गेट का आउटपुट पे, तो ये AND गेट के आउटपुट पे है, मतलब ये AND गेट का आउटपुट फाइंड आउट करना पड़ेगा. ये AND गेट का आउटपुट है यहां से, दैट मीन्स QA into QB. ओके, सो हम लिखेंगे QA into QB. Okay, now second input is this QC. So this is the output of the OR gate. ये final output जो है, जो inputs J और D को J के last flip flop, J के flip flop को input होके जाएगा. यही input पूरे system को recycle करेगा, because you know almost it's like a feedback. देखो QD बार से फीडबैक जैसे लिया जा रहा है इधर इनपुट पे, तो
इस ये जो है इस पे से सब जो जैसे स्टेट 1001 डिटेक्ट हो जाता है, as soon as the state 1001 is detected, that means QD D है ये, C B A, ठीक है। जैसे ही D और A 1 हो जाता है, they immediately send a signal to the all the flip-flops and it is recycled. Okay, it is recycled. समझ में आया? Okay, that this is the reason why it is given to the last flip-flop, because feedback लिया जाता है जैसे ही 1001 detect होता है, it is immediately given to the other flip-flops and it is recycled. ठीक है, clear है? That means it is getting logic 1 मिल रहा है because QA 1 है, 1 into 1 plus QA 1 है, बाकी सब 0 है. So 1 plus 0, it is 1. So it is getting logic 1 over here. Fine. You need not write all these details. You just write that this is the output and as soon as it detects 1001 9 के बाद वो recycle होता है. बस आपको इतना ही लिखना है. वो क्या करता है आगे आपको जानने की जरूरत. You need not write it. Okay, you will just write that after 1001 state it recycles itself. Fine. So in the truth table, please look at the board. If in the truth table first clock cycle, none of the flip-flops will be on because it is synchronous. First clock pulse, you will get first clock pulse, you will get binary 1. Binary 1 is 001. 1 से counting, this is decade counter. That means 10 तक count करेगा. 001. Second clock pulse पे क्या count करेगा? 2 count करेगा. 2 का binary क्या है? 1000010. 3 फिर थर्ड क्लॉक पल्स पे 3 काउंट करेगा. ऐसे आपको 9 तक लिखना है. You have to write till 9 only. Only till 9 you will write. Okay, you will write till 9 because after that 0 to 9 मतलब 10 states हो गए. After that it will recycle itself. Fine. Now this was all about decade counter. ठीक है, ये सब था decade counter. अब आपने अगर मैंने जो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर समझाया आपको, ये असिंक्रोनस काउंटर, ये QA से हमने निकाला था आउटपुट. ठीक है, दिस इज अप काउंटर. 0 1 2 3 4 काउंट होने वाला है. अगर मुझे उल्टा काउंट करना है तो 10 9 8 7 6 7 7 6 5 4 3 2 1 उल्टा काउंट करना है तो दिस इज नोन एज डाउन काउंटर. ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ डाउन काउंटर. दिस इज अ डाउन काउंटर. Fine, using JK flip-flops. Now in down counter, if you can see, only one thing is different. आप क्यों नहीं लेंगे as an out as a giving to the next flip-flop? You are going to make use of the other input. समझ में आया? You are going to take care of the other input. The other input जो Q bar था, वो आप क्लॉक जैसे देंगे दूसरे फ्लिप फ्लॉप को. अगेन दूसरे फ्लिप फ्लॉप का अगेन दिस इज असिंक्रोनस 3-bit काउंटर. ओके, आप वापस जो बार वाला नीचे वाला इन्वर्टेड आउटपुट है, द इन्वर्टेड आउटपुट यू विल यूज एज अ क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, अप काउंटर में क्या था, ऊपर काउंट करने वाले में क्या था, हमने ये वाला इनपुट लिया था as a clock to the next flip flop. But if you want to design a down counter, then you have to take the inverted output as the clock to the next flip flop. सेम वर्किंग है, फॉलिंग एज पे फ्लिप फ्लॉप्स चेंज करेंगे डेटा. और आपको सिर्फ एक चीज याद रखना, आपको पहले असिंक्रोनस अप काउंटर जो हमने पहले देखा उसके सब वेवफॉर्म्स ड्रॉ करने. तो देखिए, क्लॉक जब फॉलिंग एज at the falling edge, A will change its state. Now I'm doing normal वाला up counter. ठीक है, up counter it will change its state. 0 चल रहा था, उसको falling edge मिल गया, उसने change state किया, फिर से falling edge मिला, उसने change state किया and so on. A के falling edge पे B बदलेगा. B 0 0 0 चल रहा था, उसको falling edge दिख गया, उसने change state कर दिया, फिर से उसको falling edge मिला, it changed its state and so on. C का भी वैसे.
अब लेकिन आउटपुट तो हमें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अप काउंटर, वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन काउंटर, सो वी हैव टू टेक द इन्वर्जन ऑफ दैट, उसका उल्टा ड्रॉ करना है आपको बस। तो क्यू ए देखिए, लुक एट क्यू ए, 0 था फर्स्ट साइकिल तक, आपको ड्रॉ करना है 0, सॉरी 1, 0 का उल्टा क्या होता है 1, तो आप जहां जहां 0 है वहां वहां आप 1 ड्रॉ करेंगे, उसका उल्टा, बिकॉज दिस इज क्यू ए, दिस इज क्यू ए बार, बार मतलब इन्वर्जन उल्टा, तो जैसे जहां जहां 0 है वहां वहां 1 लिखेंगे, जहां जहां 1 है वहां वहां 0 लिखेंगे, एंड यू विल ड्रॉ द डायग्राम। समझ में आया? नेक्स्ट क्यू बी बार भी सेम, जहां जहां 1, यहाँ पे देखो 0 0 0 था, यहाँ पे 1 1 1 हो गया, नेक्स्ट 1 1 है, उसका उल्टा होगा 0 0 एंड सो ऑन। तो देखिए आपको क्या नंबर मिलता है, ठीक है, मैं ये सब क्लियर कर देती हूँ। देखिए आपको क्या नंबर मिलता है, आपको उल्टा काउंट करना है ना। देखिए फर्स्ट क्लॉक साइकिल, फर्स्ट क्लॉक साइकिल पे देखिए क्या मिल रहा है, 1 1 1, क्या मिल रहा है आपको 1 1 1, क्या होता है उसका मतलब 7, है ना, बाई इसका डेसिमल वैल्यू क्या है 7। नेक्स्ट क्या मिल रहा है देखो, और आप कैसे लिखते हो, पहले सी आएगा क्योंकि सी का सबसे लास्ट में है फ्लिप फ्लॉप, सबसे लास्ट में ये वाला मुझे सबसे पहले मिलेगा, है ना आउटपुट, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसलिए सी का वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर बी, फिर ए, ठीक है। सो चलो 1 1 0, सी का पहले, बी का फिर, और फिर 0, 1 1 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट डेसिमल वैल्यू 6, 1 0 1 5, 1 0 0 4, 0 1 1 that is 3। so क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है काउंट, right, 7 6 5 4 3 2 1 0, again 7 से again it will start counting like that, this is known as a 3 flip flops यूज किया इसलिए 3 bit asynchronous down counter, ठीक है, क्लियर है। now we will move to the numericals, we will move to the numericals now, fast solve करेंगे, and that will be it for today। okay, so these are few numericals that have been asked in exams। okay, I will just increase the size a little bit। okay, first one, write a note on T flip flop. If 1 kilohertz square wave is applied to T flip flop, then calculate output frequency of the flip flop। output frequency, अब बोर्ड पे देखिए, और शुड आई सॉल्व इट हियर, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बोर्ड दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ। ओके, सी ऑलवेज रिमेम्बर, राइट अ नोट ऑन टी फ्लिप फ्लॉप, आप उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक्सप्लेनेशन लेंगे कि वो टॉगल होता है, इट इज नोट एज टॉगल फ्लिप फ्लॉप, एंड देन यू विल ड्रॉ the symbol of it, how it is represented, and you will explain। Now toggle flip flop is also known as frequency divider। वो frequency divide करता है, divide सीधा आधा कर देता है frequency आउटपुट पे, ठीक है, क्योंकि वो toggling हो रहा है इसीलिए it will divide its frequency। Always remember that, and it is used in frequency division circuits। Okay, so if you will write everything given, आप given लिखोगे, the first point will be given, given के बाद आप लिखेंगे to find, मेरा हैंडराइटिंग ठीक नहीं हो रहा है यहाँ पे, आप लिखेंगे टू फाइंड, देन यू विल राइट सॉल्यूशन, ठीक है। सो यू विल राइट गिवन, व्हाट इज गिवन ओवर हियर, क्या गिवन है, आई वुड लाइक टू चेंज, ओके, व्हाट इज गिवन, given is frequency, input frequency is 1 kilohertz is given, fine। Now what do we need to find, to find output frequency, right? So I will write f out, f out is equal to how much, तो क्या है solution, मैंने क्या बोला, T flip flop हमेशा frequency को divide करता है, it divides it into 2, that means f out will be f in divided by 2। okay, सीधा सीधा, which is equal to क्या होगा फिर उसका
डिवाइड बाय एफ इन सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 किलोहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 1 किलोहर्ट्ज का, मैं किलो को नहीं हटा रही हूँ, मैं वैसे के वैसे ही रख रही हूँ 1 का आधा 0.5 किलोहर्ट्ज इज योर आंसर। हो गया, ठीक है। फिर सेंटेंस में लिखना आउटपुट फ्रीक्वेंसी 0.5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर्स। ये मैंने फॉर्मूला बताया है क्लास में। हाउ डू वी सॉल्व दिस आंसर, how do we solve this? There is a formula for this, right? Number of flip-flops is determined by choosing the lowest natural count, right? Lowest natural count मतलब 2 raised to n is equal to mod, sorry ये mod होना चाहिए, ठीक है। 2 raised to जो भी है नंबर वो आपको काउंट देता है, राइट? सही बोला मैंने। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मॉड 8 कंसिडर करना है, मॉड 8 काउंटर, मॉड 8 काउंटर में कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, कैसे फाइंड करते हैं? देयर इज अ फॉर्मूला 2 raised to n. व्हाट इज द फॉर्मूला? 2 raised to n, ठीक है। नाउ 2 raised to n मतलब क्या 2 raised to कौन सा नंबर देने से मुझे 8 मिलेगा? द आंसर इज क्या मिलेगा, कौन सा नंबर करने से मुझे 8 मिलेगा? 2 raised to 3 करने से ना, 2 raised to 3 मतलब 2 into 2 into 2 क्या मिलेगा मुझे? 8। दैट मीन्स ये क्या है, कितने बार मैंने 2 लिखा? 2 raised to 3, राइट? 2 raised to 3 मतलब 3 है, 3 डालने से मुझे 8 मिलता है। दैट मीन्स हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स शुड आई टेक? 3 flip flops. Okay, now look at the board please, because you know it takes time over there. Now what is the first one? mod 9 बनाना है मुझे, mod 9। तो mod 9 ऐसा कौन सा नंबर, 2 raised to what number? I will put a question mark over there. 2 raised to what number will give me 9? ऐसा कोई नंबर है क्या जो 9 दे सकता है? नहीं, है ना, बिकॉज इट्स एन ऑड नंबर। 2 raised to कुछ भी दोगे तो वो इवन नंबर ही आएगा। अब लेकिन 2 फॉर एग्जांपल मैं 2 raised to 3 करती हूँ, 2 raised to 3 में कितना क्या होता है? 8। तो एक स्टेट मेरा मिस हो जाता है, ये तो गलत है, छोटा हो गया ना। 8 से बड़ा है मेरा, कुछ स्टेट्स में मिस हो जाएंगे, कुछ मिस होना चाहिए क्या? मिस नहीं होना चाहिए। सो यू विल टेक द नेक्स्ट स्टेट, अगला स्टेट लो। 2 raised to 4 कितना आएगा? 2 raised to 4 is 16, चलेगा। कुछ स्टेट्स एक्स्ट्रा हो जाएंगे, चलेगा। मुझे 7 स्टेट्स डिलीट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे 9 मिल जाएगा। मैं 7 स्टेट्स डिलीट कर दूंगी, कोई बात नहीं। नैंड गेट पता है ना आपको, नैंड गेट से हम डिलीट कर सकते हैं स्टेट्स। तो यू विल यूज 4। Therefore, how many flip flops are required? 4 flip flops are required. ठीक है, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट नंबर इज mod 16। mod 16 तो अभी किया हमने। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर है mod 16। क्या 2 raised to क्या करने से मुझे 16 मिलेगा? 2 raised to 4। So the answer is 4 flip flops. Next number, mod 35. Let us see. Mod 35. Okay, next. mod 35। 2 raised to कौन सा नंबर देने से मुझे 35 के आजू बाजू वाला नंबर मिलेगा? 2 raised to 4 आपको पता है 16 है, तो 16 तो नहीं होगा। नेक्स्ट, 2 raised to 5 क्या होता है? What is 2 raised to 5? 2 raised to 5 is 32। नहीं, छोटा पड़ गया, नहीं यूज कर सकते। यूज द नेक्स्ट नंबर, 2 raised to 6। What is 2 raised to 6? 2 raised to 6 is 64। Yes, this can be used। थोड़े डिलीट करने पड़ेंगे मुझे, बट दैट इज ओके। आई थोड़े स्टेट्स में डिलीट कर लूंगी। आई कैन यूज 6। सो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स विल वी यूज? 6 फ्लिप फ्लॉप्स। ओके, फाइन। ओके,
So coming to the last problem, last numerical. Okay, a clock signal of 256 kilohertz, 256 kilohertz is applied at the input of a binary counter. Okay, frequency at the output of last flip flop is 8 kilohertz. कितने flip flops हैं हमको बताया नहीं गया है. How many flip flops are there? They've not told us. उन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि इनपुट पे 256 किलोहर्ट्ज है, इनपुट पे 256 किलोहर्ट्ज है और आउटपुट पे 8 किलोहर्ट्ज. ठीक है, अगर ये इनपुट और आउटपुट दिया है तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज्ड, मैक्सिमम डेसिमल काउंट क्या है और लास्ट बाइनरी काउंट क्या है, ये फाइंड आउट करना है. नो प्रॉब्लम, प्लीज लुक एट द बोर्ड. क्या दिया है? इनपुट फ्रीक्वेंसी. ओके, आई एम राइटिंग बिग. इनपुट फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? 256 किलोहर्ट्ज. ओके, आई थिंक दैट्स नॉट विजिबल. Visible है? Input is 256 kilohertz. What is the output? Output is 8 kilohertz. ठीक है, अब हमेशा अगर आपको काउंटर कितने कितने मॉड का है फाइंड आउट करना है तो यू कैन इजीली डिवाइड दिस. आप डिवाइड करके देखिए, जो मिलेगा आपको दैट इज दैट मच, दैट मेनी स्टेट्स, दैट इज द मॉड्यूलस ऑफ दैट काउंटर. Okay, modulus क्या है? What is the modulus? Modulus is input upon output. Okay, so that means 256k upon 8k. K cancelled, 8 ones are 8 32s. So this is a mod 32 counter. ठीक है, this is a mod 32 counter. mod 32 counter के लिए आपको कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे? mod 32 काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे? what raised to 2? 2 raised to what will give me somewhere near 32. 32 के पास लाएगा मुझे. क्या होगा? चलो let us try. 2 raised to 4. 4 क्या देगा? 16. नहीं, काम नहीं करेगा. 16 बहुत छोटा हो गया. Right? Let's go to the next number. What is the next number? 2 raised to 5. Right? 2 raised to 5 will give me 64. Yes, this will work. So how many flip flops am I using? 2 raised to 5 मतलब 5 flip flops. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5. 5 flip flops are going to be used. What will be the maximum decimal count? Maximum decimal count मतलब ये 32 mod 32 counter है. Right? This is a mod 32 counter. So this is a mod 32 counter. ठीक है, तो मतलब कहां तक काउंट करेगा वो? 0 to डेसिमल नंबर्स में, बाइनरी नंबर्स में नहीं पूछा उन्होंने, डेसिमल में पूछा. 0 to 31 काउंट करेगा. राइट, mod 32 काउंटर है तो 0 to 31 काउंट करेगा. तो मैक्सिमम डेसिमल काउंट कौन सा है? लास्ट वाला कौन सा नंबर है? 31. So maximum decimal count is going to be 31. Next, what is the last binary output? Last binary output क्या होने वाला है? 31 ही होगा. 31 का बाइनरी. ठीक है, लेकिन 31 का बाइनरी आपको आता है क्या? आपको 8 तक आता है. राइट, वो 8 4 2 1. 1 into 2 is 1 into 2 is 2. 2 into 2 is 4. 4 into 2 is 8. 8 into 2 करना है आपको 16. ठीक है, आपको 8 तक तो बाइनरी आता है. आपको 1 0 0 1, आपको 4 डिजिट बाइनरी आता है. 5 डिजिट, 5th डिजिट 16 होता है उसका वैल्यू. ठीक है, सो फॉर 31 क्या करना पड़ेगा? 1 16 plus 8 24. ठीक है, प्लस 4 28, 29 30 and 31. So this is the binary value of 31. So this is the last binary output that you are going to get. What is the value? I have written the value on top. उसको count करते जाना, addition करते जाना. ठीक है, this is the last binary output of 31 which you are going to get. So the last binary output I will write over here 1 1 1 1 and 1. This is the last binary output you are going to
get. I hope all the concepts are clear. Here we end the chapter. It's a very interesting chapter. You just have to understand from where clock signals are going and all. And next week we will be starting with a new chapter. Okay. Until then, take care and bye-bye. If you have any doubt at any time, please put it in the comment section, or you can message me. Any doubt, please feel free to ask. I have explained every topic in detail. Please, if it's a lengthy video, you can pause it, take time. You can watch the video, all videos in for that matter. You can watch the video in bits, but pura dekhna. You sit with your electronics book and you write, make notes, because everything what I'm saying you may not grasp immediately. So make notes so that when at the time of exam you have everything in front of you instead of seeing the whole video, right? So when you're seeing the video, you can see in parts, but make sure you are taking notes and seeing the whole video to understand the concept. Okay, thank you.